हमारी आज की वीडियो फिर से ग्रीनलैंड के बारे में है और काफ़ी लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि हम रोज़ ग्रीनलैंड के ऊपर या हर वीडियो ग्रीनलैंड के ऊपर क्यों बना रहे हैं, जबकि दुनिया में और भी बहुत से इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो हमारा ग्रीनलैंड के ऊपर फोकस एक स्पेसिफिक वजह से है। वो ये है कि शायद पाकिस्तान में लोग, क्योंकि यहाँ से ग्रीनलैंड की प्रॉक्सिमिटी इतनी नहीं है, इस इशू को इतना सिग्निफिकेंस इसकी समझ नहीं पा रहे। तो इस इशू की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर हम करंट कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स में देखें तो ईरान इज़राइल जो आपका एक कोल्ड वॉर, बल्कि हॉट वॉर ही, सेमी कोल्ड वॉर सेमी हॉट वॉर जो भी आप कहना चाहें चल रही है ना, वो उतना सिग्निफिकेंट है। जो आपका यमन और मिडल ईस्ट के जो हालात हैं वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। इवन जो कि ताइवान और चाइना का साउथ चाइना सी में यूएस के साथ कॉन्फ्रंटेशन है, वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा कि यूक्रेन भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि इस वक्त जो ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है वो सिग्निफिकेंट है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत ज़्यादा यू कुड से जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, वो कहेंगे नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम अंडर प्ले नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल, आई अंडरस्टैंड। कोई कहीं एक गोली भी चलती है अगर, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की जो मैंने पहले बताई, इनकी भी एक सिग्निफिकेंस है। लेकिन जो ग्रीनलैंड के साथ हो रहा है, कि डिफाइन करेगा ट्रजेक्ट्री आपके अगले 20, 30, 40, 50, इवन 100 साल तक जा सकती है बात। क्योंकि जनरली जो स्ट्रेटिजिक लोकेशन ग्रीनलैंड की है, उसके अलावा ग्रीनलैंड पर्पस क्या सर्व करता है यूएस के लिए, उससे वो स्ट्रेटिजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑब्टेन करना चाह रहा है, उधर इन्वॉल्व कौन कौन है, और उस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो आपका आर्कटिक रीजन है उसको, प्लस आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर की एक्सेस के लिए ग्रीनलैंड कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें पहले समझने की ज़रूरत है। आपका जितना भी नॉर्थ पोल है, जो आर्कटिक सर्कल है, उसकी बेस आप समझो कि दैट इज़ फ्रॉम वेयर ग्रीनलैंड इज द प्लेस जहाँ से उसको, इफ एनीवन हैज़ कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, हैज़ एक्सेस टू ग्रीनलैंड, इज द पर्सन हु विल डोमिनेट द आर्कटिक सर्कल। सेकेंडली, आपका जो ग्रीनलैंड से सी रूट गुजरता है, जो कि एक फ्रोजन सी रूट था, जो कि नाउ इट्स बिकम एक्सेसिबल बाय मर्चेंट नेवी एंड अदर नेवल वेसल्स, वो सी रूट इज़ सिग्निफिकेंटली स्मॉलर और शॉर्टर देन द ट्रेडिशनल सी रूट्स जो कि रन करते हैं। सो जो ग्रीनलैंड है, दैट इज़ स्ट्रेटिजिक पीस ऑफ लैंड, और जो उसको बेसिकली एक्सेस कर लेगा या अपनी वहाँ पर डोमिनेंस, मोनोपली, हेजेमनी क्रिएट कर लेगा, फ्यूचर में वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर तक एक्सेस इजीली ऑब्टेन कर सकता है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आपका कनाडा यानी नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है। कनाडा, यूएस, मैक्सिको एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ नीचे तक। इस वजह से दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ ऑफ दैट मच सिग्निफिकेंट। दूसरी बात यह है कि इट्स वेरी रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी एक अंडरलाइंग थीम है। एंड दे वांट एक्सेस टू, मतलब जो भी सुपर पावर्स हैं ग्लोबल, आपकी जो चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएस हो गया, दे नीड एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. However, with that said, that is not the only reason why they're competing for it. It has much deeper meanings. It is a race for dominance. कि कौन डोमिनेट कर सकता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर को, कौन उस गेट के ऊपर बैठ सकता है जहाँ से वेस्टर्न हेमिस्फेयर एक्सेस हो सकता है, कौन उस जगह बैठ सकता है जहाँ से हम यूएस का एक सेफ्टी क्वेश्चन, एक बफर जो है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू रीजंस, और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि कैसे यूएस जो है वो एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक पुश कर रहा था, जिसके अंदर मिलिट्री थ्रेट्स भी इन्वॉल्व थी टू टेक ओवर ग्रीनलैंड। हाउएवर, डावोस के अंदर अभी रिसेंटली जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो गैदरिंग हुई है, उसमें ट्रंप ने जब स्पीच की तो उनका स्टैंस थोड़ा सा नरम देखा गया। और इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नरम स्टैंस इस वजह से है क्योंकि यूरोप यूनिफाई हुआ और उन्होंने बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस शो की एंड ऑल। दैट इज़ अटर नॉनसेंस भाई। इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट द यूएस एंड इट्स पॉलिटिकल and military might and economic might, you would understand that European Union combined was in no position to put up a stiff resistance. And I'll tell you why. इस वक्त रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक ऑनस्लॉट की हुई है। इस वक्त यूरोपियन यूनियन इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द यूएस फॉर मिलिट्री प्रोटेक्शन। यूरोप के पास, अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेटफॉर्म्स, अब वो बहुत टेक्निकल उसमें चले जाएंगे हम, लेकिन आई जस्ट टेल यू समराइज करके, अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेटफॉर्म्स दे डोंट हैव दैट पोटेंशियल कि वो रशिया को
काउंटर कर सकें इन केस ऑफ एन इन्वेजन और एनीथिंग गोज रॉन्ग और अ हॉट कॉन्फ्लिक्ट. So they extensively depend on their NATO treaty with जिसमें US भी included है and the US to protect them. और अगर लोग कहते हैं कि भाई ये यूएस जो है वो उनके स्टिफ रीजन से बच कर गया, दैट इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली ट्रंप ने एक एक्सट्रीम मास्टर क्लास इन द आर्ट ऑफ डील यू वुड से शो किया यहाँ पे. एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दैट दिस वाज ट्रंप बैकिंग ऑफ, और ट्रंप ने थोड़ी सी जो धीमा लहजा डेवोस में रखा उसकी वजह ये थी कि भाई हम यूरोप ने एक यूनिफाइड फ्रंट शो किया एंड ऑल. दैट इज़ नॉट ट्रू. सो व्हाट्स ट्रू इज़ दैट ट्रंप ने एक ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की जिसमें कंसेशन जो उनको मिली, तो दे ऑल टुक अ साई ऑफ रिलीफ कि शुक्र है कि ट्रंप डिड नॉट यूज़ फोर्स. सो व्हाट डिड ट्रंप से? ट्रंप ने कहा डेवोस में कि आई विल नॉट यूज़ फोर्स, आई डोंट वांट टू यूज़ फोर्स एंड आई विल नॉट यूज़ फोर्स एंड वी विल कम टू एन एग्रीमेंट. एंड देन ही सेड दैट, उससे पहले थोड़ा सा उन्होंने उससे कुछ अर्सा पहले एक आध दिन पहले बयान दिया था कि he had a very productive meeting with the Secretary General of NATO, Mark Rutte. और उसके बाद से थोड़े से जो ये क्लाउड्स थे ना, डार्क क्लाउड्स ऑफ US forces going to Greenland and all, वो सब कम हो गए थे. A lot of people from European leaders जितने भी थे, फ्रांस के particularly, डेनमार्क के, they were very much skeptical and they were saying that कि, और बहुत लोगों ने criticize किया Secretary General of NATO को कि आपने you were appeasing Trump and you were trying to use appeasing tactics, जिस वजह से आप जो है ना जिसका कोई हमें ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हमें एक स्टिफ फ्रंट शो करना था एंड ऑल. हाउएवर आई वुड वांट टू रिमाइंड यूरोप कि ये जो आपकी ये जो बेसिकली वॉर के क्लाउड्स जो हैं ये फेड ऑफ हुए हैं, इसके पीछे सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट का ही बेसिकली हाथ था, जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं. अदरवाइज ट्रंप was not giving you concessions. He might have, but he would have been even worse for you. And he was doing his job. Secretary General Mark Rutte did his job. He was keeping NATO together. He did not go and become like a boogeyman for Trump कि मैं हम तो unreasonable हो जाएंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे. He was like trying to bring both sides to the table and they were coming to a common agreement. That's his job, and that's what he did perfectly. And I would say that Trump को यहाँ तक लाने में भी perhaps इनका बहुत हाथ है, Secretary General Mark Rutte जो है. तो अब बात आती है कि क्या ट्रंप ने कंसेशंस क्यों दी, किस वजह से दी. अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसके अंदर मैंने ये बात क्लियरली कही थी कि ऑब्वियसली कोई ना कोई टर्म्स पे आएंगे डेनिश पीपल एंड ग्रीनलैंड वाले मामले को लेकर यूरोप सारा का सारा. एंड वेयर इट्स पॉसिबल कि यूएस कैन टेक ओवर, यूएस विल कम टू सम टर्म्स. और ये बात हमने पहले भी की थी और मैं आज फिर कह रहा हूँ और अभी सामने आ रही है कि जो एक फ्रेमवर्क बनाने की बात की है ट्रंप ने कि हम एक नेटो के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसके अंदर दो तीन बातें भी सामने आई हैं. जिसमें पहली बात यह है कि यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज़ होगी इन ग्रीनलैंड, जिसकी वजह ये कि स्ट्रेटेजिक बेसिस बनेंगे और अपने वो वेपन प्लेटफॉर्म्स वहाँ डिप्लॉय करेंगे ताकि रशिया के आर्कटिक इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके. एंड नंबर 2 कि अमेरिका विल हैव अ वीटो इन एनी इकोनॉमिक और अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो भी उसके अंदर जो डील्स करेंगे ये, तो उनके अंदर उसको एक वीटो की पावर दी जाएगी. यानी कि अगर डेनमार्क की गवर्नमेंट या ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट जो है वो कोई चाइना से, रशिया से, किसी से भी कोई डील कर रही है किसी भी कंट्री के साथ, और अमेरिका को फील होता है कि ये डील या ये इन्वेस्टमेंट या ये किसी भी तरह का जो मुआहिदा है ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट और ओवरऑल नेटो के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो दे कैन वीटो इट. तो इस फ्रेमवर्क के बारे में अभी तक ये सामने आया है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी रीजनेबल कंसेशन जो कि अमेरिका ने दी है. इट्स समथिंग दैट वी कुड ऑल सी वुड हैपन. और यूरोप वॉज इन नो पोजिशन टू नेगोशिएट. यूरोप वॉज जस्ट ऑल टॉक कि हम बुली हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं. बट अल्टीमेटली आपने करना वही था बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट स्टैंड अप टू द यूएस एंड इट इज़ वॉट इट इज़. नाउ इस सब कुछ से देर 3 बेसिकली आउटकम्स जो इसकी हुई हैं. एक इसकी शॉर्ट टर्म आउटकम है, फिर एक इसकी मीडियम टर्म आउटकम है और एक इसकी लॉन्ग टर्म आउटकम है. इसकी शॉर्ट टर्म आउटकम जो है ना वो अमेरिका के लिए एक विन है. अमेरिका के लिए एक विन इस तरह है कि नाउ दैट इट विल हैव एक्सेस टू ग्रीनलैंड, इट कैन put in place the safeguards it wants to put in order to protect itself and consolidate there and have more influence in the Arctic region and have more influence in the Western hemisphere. जो उसका objective था वो meet हो गया. And secondly, NATO fell in line. NATO had to comply. Europe had to comply. And उसके बाद now America has emerged as the leader of the European nations as well. Or whether you like it or whether you don't,
people, it has clearly shown कि यूरोप अगर कोई चीज़ नहीं भी पसंद करता तो it doesn't matter, because like Mark Rutte said, called Trump daddy. America is the daddy, so it is what it is. So America has emerged as the daddy, or अब you can't fight with that, and it's just the reality of it. नंबर टू, इसके अंदर जो दूसरा बेनिफिट है जिसके लिए, वो है रशिया के लिए. रशिया का बेनिफिट ये है कि नाउ दे हैव completely exposed how fragile NATO is. So, due to this conflict, NATO was literally on the brink of collapse because the US was demanding something, and the NATO countries were falling apart. They were losing their minds, and Russia has seen that. देखो भाई, ये it's just that simple. It's all it will take is just a little push, and NATO can fall apart. So, medium term winner, Russia hai. If Russia plays it, has a plan to dismember NATO, or just bring cracks into NATO, then that would be Russia's, you could say, a win for Russia, because now they've exposed that that NATO is not that much of a threat generally, because even then Trump is not prepared to is not committed enough to NATO. और उनको पता थी ये बात, पर इस सब से अब ये बात सामने आ गई है कि now they understand that NATO is a fragile thing, or generally NATO is now बस हवा में है फिलहाल, but बस ठीक है, they do have a treaty, but I wouldn't say that it's completely gone, but it's weak. Russia knows it, and Russia can completely exploit this. So medium term में if Russia plays this right, then he can definitely put wedges in between countries and like break up NATO, और देखते हैं होता है कि नहीं होता. But this is something that if I was in Russia and I was looking at the situation, my first priority would be how do we break up NATO, because if NATO breaks up, यूरोप रशिया के लिए खुल गया है. देन इट्स कहते हैं ना, ओपन सीजन फॉर रशिया. जो यूक्रेन के साथ किया है वो किसी और पोलैंड के साथ भी कर सकता है. जो यूक्रेन के साथ किया है वो फिर स्पेन के साथ भी कर सकता है. जो यूक्रेन के साथ किया है वो फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री जो कि नेटो मेंबर है उसके साथ कर सकता है वो. माई पॉइंट बीइंग कि NATO is the only thing that has created sort of a deterrence for Russia from bullying the European nations as much as it can to potential है उसका. So I think Russia has found an opportunity, and let's see if that it plays right or not. And the third long-term winner is China. Now a lot of people say China कैसे इस whole equation में involved है. Well, China इस तरह involved है कि now that all of this has happened, and now that US troop presence is going to increase in the Arctic region and in the northern hemisphere जो है आपका north जो है, it opens up more chances of a conflict between Russia and the US. Because देखो दो तरफ की troops आमने सामने अब खड़ी हैं. आर्कटिक के अंदर heavily Russians भी deployed हैं और heavily US वाले भी deployed हैं. So it opens up another gate कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है. It's now a flashpoint जैसे आप कहते हैं. जब एक flashpoint बन जाता है तो and possibilities of something going wrong or a conflict, they increase. And who benefits if these two powers fight? The emerging power, because फिर vacuum create होगा, economies collapse करेंगी, and who has a lot of money to spend? जब economies crash करती हैं तो people who have money, now let's replace people with China. When China has money, which it has, जिसने अपने dollars के gold के कहते हैं ना जो reserves हैं उनके अंबार लगाए हुए, when the economy will fall, when there will be a conflict, China will buy everything up for pennies on the dollar, and that's the true strength, because ultimately anyone who owns it wins it. और फिर उस vacuum को fill करने के लिए, if either one of these two powers, and I'm thinking long term, ends up overpowering the other, it creates more space for another power to rise. Another power to rise, that would be China. So China is the long term winner here. Secondly, there's this strategy in the art of war and in the Chinese basically textures of warfare जो कहते हैं कि if your enemy is making a mistake, let them make that mistake, because it's going to it's going to self-destruct. तो Chinese analysts ये कहते हैं कि US by exerting this whole influence over the Western Hemisphere has opened up a lot of cracks in traditional allies as well. Europe में cracks हैं, Greenland वाले जगह तो दे रहे हैं आपको, लेकिन they don't like you anymore. South America वाले आपके Maduro के इसके बाद ऑपरेशन के बाद जो है they're scared, but they don't like you anymore. So इस वजह से they're making a mistake, because they think that Chinese think that
द US is now more exposed than ever. ठीक है, तब तक आपके पास मिलिट्री पावर है, they're going to be afraid of you. But what happens when there's someone who can challenge your military power? I'll tell you what will happen. When there's someone who can challenge your military power, people who are afraid of you will come into alliances with the person who can challenge you. So this has happened with Canada. Now Canada has come into a strategic partnership with the US. Now the strategic partnership की अभी तक जो हमें डिटेल्स मिली हैं उसमें ये है कि वो इकोनॉमिक उनकी आपस में पार्टनरशिप है. However, that's the first step. Or what would happen when Canada would enter into other strategic partnerships with China? इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन इज़ ऑल्सो एक्टिवली, रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के देखिए उनके मल्टीपल के फ्रांस एंड इटली एंड स्पेन एंड पोलैंड देयर, even Germany for that fact is looking for options with the Chinese for weapons sales and all. So they're looking somewhere else now, because now they're either they're afraid of you and they're complying for now, but they're keeping their options open कि यार अगर हमने US के ऊपर ही खाली रिलाई किया, so we don't know कल क्या होगा, कल को यही हमें बुली करेगा, कल को यही हमसे और बदमाशियाँ करके और कंसेशंस लेगा और इस तरह की हमसे जो है अपनी बातें मनवाएगा. सो वी नीड समवन हु कैन सपोर्ट अस एंड हम सोली रिलायंट US के ऊपर ना हो, हमारे पास एक बैकअप प्लान हो, एक और इमर्जिंग और सुपर पावर और ग्लोबल प्लेयर का जो हमें सपोर्ट कर सके, जिसके साथ हम थोड़ा सा अपनी डिपेंडेंस जो है US के ऊपर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कम कर सके. इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ कैनेडियन ट्रेड इज़ विद द US, मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन ट्रेड इज़ रिलायंट ऑन द US एंड इट्स फ्रेमवर्क्स जो US ने डेवलप किए थे. तो यूरोप इज इन नो पोजिशन टू टेक अ स्टैंड और गिव स्टिफ रेजिस्टेंस टू द US. दैट्स जस्ट लूडिक्रस. और जो लोग उस वक्त चैंपियन कर रहे थे ना, उनको वो बहुत ही शैलो अप्रोच से चल रहे थे कि हाँ खड़े होकर कह दो, एक बयान दे दो कि हम जी US के ये नहीं होने देंगे भाई. लेकिन नहीं होने देने के लिए आपके पास कुछ हो भी तो सही ना, कोई आप किसी इस पोजिशन में हो जहाँ पर आप US को नो बोलो तो वो सुने भी. US doesn't care because all of your financial systems, all of your economic systems, all of your defense systems are completely reliant on the US, and that is a conversation we'll have another time. But आपके पास है कुछ नहीं और आप stiff resistance show करोगे, that's just a dream. और ये बात अब जो लोग sensible लोग हैं, जो कि अब गवर्नमेंट्स में भी हैं यूरोप की, कनाडा की, they understand. In South America की for that fact, they're like let's look somewhere else. ठीक है, इनसे भी फिलहाल since they are the global superpower हम उनसे बात करेंगे, but we need to have a backup plan, and that's what they're doing. And I'll tell you something interesting. Pakistan has been doing this for a very long time. So Pakistan is friends with the US. Pakistan is friends with Russia. Pakistan is friends with China. Great friends with China. So we're not totally reliant on that one country. और Pakistan has been playing this balancing act जिसके ऊपर इंडिया हमें बहुत ज़्यादा ना कहता है कि तुम लोग तो किसी के भी दोस्त बन जाते हो मफाद देके. यार मेरी बात सुनो, इंडिया जूते खा रहे हो पूरी दुनिया से इस वक्त. पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को जूते मार रही है. एक फैक्ट है यार. देखो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हों, आप इसको वोट उसको वोट, फजूल बात नहीं अपनी जगह. करंट गवर्नमेंट आपकी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अच्छा खेल रही है. जो है वो है, आपने इसको वोट दो या उसको वोट दो, छोड़ दो इस बात को. यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड इन द वर्ल्ड. यू वन अ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड यू हैव टू एडमिट दैट. इट्स समथिंग दैट जो आपकी आंखों के सामने. ठीक है, तो खैर इस बात को हम छोड़ें. सो वी अंडरस्टैंड दिस. हम पाकिस्तानी शायद, आई डोंट नो, अल्लाह की मेहरबानी है कि हम ये कर पा रहे हैं. एंड वी हैव people who जिन्होंने किया होगा ये काम, you know, they must be very smart people, and I'm glad they did it. But it's a good policy that you have everyone in your pocket. You're not just dependent on China, you're not just dependent on Russia, you're not just dependent on America. सबको लेके चल सकते हो आप. और ये एक this is a balancing act that goes in our favor. So the point I was making was that what happens next in Greenland is the gateway to what will happen in the next 50 years or 100 years, and ultimately will lead to, you know, perhaps will be the gateway to the formation of the new world order that as we know it. So a lot of people say नहीं वो तो BRICS कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है. They were all precursors to what had happened. My orthodoxy is that what is happening today in Greenland is the trigger of the new world order, because generally what will happen there will decide that who comes up, who is the next superpower, what the world order, you know, would look like, and that is how the world is going to shape itself. We'll talk about it साथ साथ में as it develops, but आज मैं बात कर रहा हूँ Greenland is the place, Arctic Circle is the place that will lead to the future conflict, that will lead to what will happen next to the world order as we know it today.